Already, Bismillahirrahmanirrahim. Miss Waziha is there with us. Miss Waziha, please let am I audible? So let okay. All right, thank you so much. Well, respected participants, in today's meeting, in today's session, we are going to discuss important questions that we are discussing. But today's questions are important than that of previous questions because these questions are moving around a single personality, and that is William Shakespeare. So in today's discussion, we are going to discuss all the details that are about William Shakespeare and the questions that have been the part of this personality in previous interviews. Let me paste all the questions in front of you, and here we go. So I'm sure you're able to locate these questions on your screen. Oh yes. So participants, I'm sure that the screen is visible. In first 30 minutes, we are going to have this session dealing with the answers of these questions. And in the second part of today's session, we have a mock session, mock interview of Mr. Muhammad Imran Awan. So we will try to learn a lot many things today. So please keep your notebooks with you and try to note all the details. Well, okay, the first question is how Shakespeare's comedies are different than that of classical comedies. Respected participants, please do confirm it in the chat box. Do you know what do you mean? What do the questioner, what do the interviewer mean by classical comedies? I should explain classical comedies, CC. So do you know, have any idea about classical comedies? The question is basically how the comedies of William Shakespeare are different. So in case you haven't any idea about classical comedies, I will explain this particular term for you. In case you know, you may mention yes or no. Oh yes, Anya, that's the one part of the classical comedies. Well, जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हो कि क्लासिकल कॉमेडीज क्या होती हैं, इनके अंदर फर्क क्या होता है, देखो दो चीजें हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लासिकल और रोमांटिक जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है. जहां तक शेक्सपियर की कॉमेडीज की बात है, शेक्सपियर जो है एक ऐसा पर्सन था जिसने ट्रेडिशनल क्लासिकल कॉमेडीज को और ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास किया था. ठीक है. क्या होता था, कौन सी हैं जी थ्री यूनिटीज जो हैं आप जानते हैं? थ्री यूनिटीज कौन कौन सी होती हैं? आपको पता है कि कौन सी जो है वो थ्री यूनिटीज थे? यूनिटी ऑफ, सो हाउ मेनी टोटल यूनिटीज आर देयर? टाइम, प्लेस एंड एक्शन. आप सभी जो है वो इसका आंसर कर सकते हैं. इवन अगर कोई पार्टिसिपेंट आंसर कर भी दे फिर भी इसका आंसर करने की कोशिश किया गया था ताकि आपका रिवाइज हो जाए. यस, विलियम शेक्सपियर वाज द पर्सन कि जिसने इन तमाम को बाईपास किया था. जब भी याद रखिएगा कॉमेडीज की आप बात करोगे, एक पर्सन को विलियम शेक्सपियर के साथ कॉमेडीज के लिए जरूर जो है वो मेंशन करोगे, और वो है बेन जॉनसन. ओके, इट्स नॉट जॉनसन, ईच के साथ नहीं, बेन जॉनसन जो है. बेन जॉनसन जो है हम जानते हैं कि वो जब भी लिखता था, जब भी उसने लिखा तो उसने ट्रेडिशनल क्लासिकल सारी यूनिटीज को फॉलो करने की कोशिश की. उनको ये होता था कि हमारे पास रियलिज्म होने चाहिए. क्लासिकल कॉमेडीज की सबसे पहली जो जो करेक्टरिस्टिक थी दैट इज द रियलिज्म. जो सेकंड होती थी उनका ये होता था कि या तो ये सैटिरिक पर्पसेस के लिए हो या इसके अंदर कोई डायडेक्टिक अप्रोच होने चाहिए. और थर्ड उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये होते थे कि आपको क्लासिकल रूल्स के साथ जो है वो डेक्रम के साथ जो है, यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम, स्पेस एंड एक्शन को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. अगर ये नहीं होती हैं तो इट मींस व्हाटएवर यू आर प्रोड्यूसिंग दैट इज यू नो द बुलशिट, वो अच्छा नहीं है. ठीक है जी. सो विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी कॉमेडीज कैसे मुख्तलिफ हैं. देखिए, इसने जो भी लिखा वो सारी की सारी रोमांटिक टाइप की थी. अब मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये है, क्योंकि हम क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, ज्यादा टाइप कर नहीं सकेंगे, आपने नोट करते चले जाना है. जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आप विलियम शेक्सपियर की इन कॉमेडीज की जरूर बात कीजिएगा,
कॉमेडी ऑफ एरर की बात कीजिएगा, द टेमिंग ऑफ द शो, द कॉमेडी ऑफ एरर। आप जरा, चूंकि मैं तेजी से बोल रहा होता हूँ, आप सिर्फ ये भी नोट कर सकते हैं सी ऑफ अर, इस तरह से बाद में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल ट्रेडिशनल कॉमेडीज से इमरान अवान साहब मुराद वो कॉमेडीज हैं जिनके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। पहले नंबर पर रियलिज्म होनी चाहिए इमरान, अब मैं लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, रियलिज्म होने चाहिए। दूसरे नंबर पर उनका पर्पस होना चाहिए कि इधर वो जो है वो सेट्रिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, या उनका पर्पस जो है वो डाइडेक्टिक हो, ठीक है, कि इनके लिए इस्तेमाल होती है। और तीसरी जो है वो उसकी सोफिस्टिकेशन का लेवल ये होना चाहिए कि थ्री यूनिटीज को फॉलो कर रहा हो। अगर ये है तो वो हमारे पास क्लासिकल कॉमेडीज के अंदर फॉल करता है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन इमरान? सो हैव यू गोटन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ताकि मैं यहाँ से आगे चल सकूं। इमरान, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इमरान साहब होती है हमारे पास क्लासिकल कॉमेडीज। अच्छा जी, अब जो है वो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज डिफरेंट कैसे हैं, हमें ये बताना है। देखिए पार्टिसिपेंट्स, याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर की मैंने बताया द कॉमेडी ऑफ एरर की बात करोगे, द टेमिंग ऑफ द श्रू की बात करोगे, और तीसरे नंबर पे द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर की बात करोगे। विंडसर, अक्सर लोगों को ये विंडसर जो है वो समझ में आता है, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर की बात करोगे, ठीक है, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। मैंने इसको मुकम्मल ही लिख दिया ताकि आप जो है वो इसको नोट कर सके। सो इन तीन कॉमेडीज की आप बात कीजिए, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि वैसे तो इसकी बहुत सी कॉमेडीज हैं, एज यू लाइक इट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है जो कि रोमांटिक कॉमेडी है, मच अडो अबाउट नथिंग है, ट्वेल्थ नाइट है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, लेकिन उनके अंदर कॉमिक जेस्चर ज्यादा आ जाता है। सो आप इनकी बात करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको जो है वो ये क्वेश्चन को आंसर आप कर सकोगे, राइट। सो पहले क्वेश्चन का आंसर जिसको पता चल चुका है ये हमारा जो है, और इनके लिए जो रीडिंग्स मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेटिव सेटिंग इन विलियम शेक्सपियर्स सेटिंग। शायद ये दूसरा सेटिंग जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर्स नॉवेल्स, सॉरी ड्रामास, नॉवेल्स उसने लिखे नहीं थे। तो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामास के अंदर जो सेटिंग थी उसके बारे में बता रहा है कि इमेजिनेटिव सेटिंग का रोल क्या था। देखिए, इमेजिनेटिव जो है वो विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर जो है वो फैंसीफुल जरूर था, वो चीजों को बहुत मजे के साथ एक्सप्लेन करता था। अगर हम इसकी बात करते हैं इमेजिनेटिव सेटिंग से, इमेजिनेटिव सेटिंग से मुराद क्या होता है बाय द वे, what do you understand by this term? My question is imaginative setting से आपके जहन में क्या आता है, कौन सी सेटिंग हो सकती है? अगर पैनल आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इट इज अबाउट इमेजिनेटिव सेटिंग, तो उसको आप कैसे बयान करोगे? इमेजिनेटिव सेटिंग्स ऐसी सेटिंग्स जो रियल लाइफ से हटके होती हैं, जो सिर्फ आपने सोची हुई होती है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, वो इमेजिनेटिव सेटिंग्स होती हैं जिनका आंसर नहीं आ सका। इर्तिका, आपको वजीहा, वजीहा ने कौन सा शायद किया, यशवीन, इसको जो है वो समझ लीजिए। देखिए, विलियम शेक्सपियर की जितने भी रोमांटिक कॉमेडीज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो हमारी जो लाइफ है उससे हटके है। अगर आप पढ़ने की कोशिश करें विलियम शेक्सपियर को तो आपको पता ही चलता है कि विलियम शेक्सपियर की जिंदगी में तो शायद रौनकें रही हों, लेकिन उसकी कॉमेडीज के अंदर हमें वो उस तरह से चीजें नजर नहीं आती हैं। अगर आप बात करना चाहें किसी भी कॉमेडी की, उसकी बात जो है वो ले लीजिए। अब आप देखते हैं कि इसने अपनी कॉमेडीज के अंदर इमेजिनेटिव सेटिंग्स को इस्तेमाल किया। अब हमें ये बताना है कि रूल क्या है या वजह क्या है इसकी, क्यों इसने इस्तेमाल किया। देखें, अ, इसमें हमारे पास जो सेटिंग्स हैं, व्हाट इज द इमेजिनेटिव सेटिंग्स, हमें इमेजिनेटिव सेटिंग से समझ में आता है वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामास को सेट किया। जिस तरह से थीबिस एक प्लेस का नाम है, उसके अंदर जो है वो सेट किया। आर्डन एक प्लेस का नाम है, आप जानते हैं, एज यू लाइक इट में इसका यूज है। इलीरिया जो है इसका मिड समर्स नाइट ड्रीम के अंदर इसका यूज है। यूफेसिस है, विनस है। सो ये सारी की सारी जगहें इसने इस्तेमाल की। अब ये सारी की सारी जगह इस्तेमाल करने का मकसद उसका ये था
कि वो अपनी कॉमेडीज को डिफरेंट करना चाहता था। हमारी जो रोजाना की थकावट वाली रूटीन है, जो हम डे बाय डे लाइफ में जिसमें जीते हैं, उससे वो मुख्तलिफ लेके जाता है। सो इसकी सेटिंग्स की एक वजह तो ये है कि ये दूसरों से यूनिक हो जाता है, दूसरों से मुख्तलिफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है, विलियम शेक्सपियर खुद को मुख्तलिफ बनाता है। खुद को मुख्तलिफ बनाने की वजह ये है कि अब इसकी कॉमेडीज के अंदर जो है, इसकी जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर हमें नजर आता है कि लव भी चल रहा है, डांसिंग और पीपल एंगेज हो रहे हैं। उनके लिए लाइफ जो है वो बड़ी लिवली किस्म की लाइफ है। हम जब दूसरी कॉमेडीज को देखते हैं, उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि वो शायद वो रूल्स रेगुलेशन के चक्कर में इतना जकड़ चुके हैं कि वो ऑडियंस को वो यूनिवर्सल टेस्ट वो अप्रोच दे ही नहीं सके। सो यस, ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल हानिया, आप ठीक लिख रहे हैं। द किंगडम ऑफ इलेरिया जो है हमारे पास जो है, और ये सारी की सारी उसने परफेक्शन के साथ यूज की है। ये सारी की सारी उसने बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे के साथ इस्तेमाल की है। सो विलियम शेक्सपियर की सेटिंग्स जो हैं, इमेजिनेटिव सेटिंग्स जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन इमेजिनेटिव सेटिंग्स में अगर आप आंसर करेंगे, आप यूज कर सकते हैं रेफरेंस थेबिस की तरफ, आर्डन की तरफ, एलिरिया की तरफ, यूफिसिस की तरफ और वीनस की तरफ। सो आई एम श्योर दैट आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि ये मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको मजीद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब आप इनको आंसर करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको ये बताने की जरूरत है कि किस तरह से ये इमेजिनेटिव सेटिंग्स दूसरी सेटिंग से मुख्तलिफ है। सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई? डिड यू गेट द आंसर कि इसका क्या आंसर हो सकता है और किस समत में आप इसको लेके चल सकते हो? यहाँ तक क्लियर? ऑलराइट, सिर्फ हानिया को क्लियर हुआ? ओके इमरान साहब, गुड। ऑलराइट, ठीक है, गुड। यशफीन जो है वो मुझे लगता है कहीं मसरूफ है। यशफीन का कमेंट लेट आया। कहीं यशफीन और वजीहा आपस में गपशप तो नहीं लगा रहे, बातें तो नहीं कर रहे हैं? दैट इज द रीजन कि वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द लाइटर नोट, रियलिज्म जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट ही। अच्छा, गपशप लगा रहे हैं या वजीहा? ये सिर्फ पिछले क्वेश्चन के लिए था। वैसे पीपीएससी वाले जो हैं वो खासे इंतजार की सूली पे लटक रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपके सब्र का इम्तहान ले रहा है। शायद कमीशन बाकी रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, इंग्लिश वालों के साथ उन्होंने खास एक दुश्मनी अपनी मोल ले ली है। तो आपने देखा कि अंग्रेजी वाले जो हैं वो उनको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो रिजल्ट ही नहीं अभी तक अनाउंस कर रहे। लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो इनसाइडर्स न्यूज के मुताबिक ना रिजल्ट प्रिपेयर्ड है। कुछ चंद एक पेपर्स ऐसे हैं कि जिन पे शायद उनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं। और वो रिजर्वेशंस इस तरह की नहीं है, स्कैमर के हवाले से नहीं है। वो रिजर्वेशंस हैं आई थिंक कि जो है उसके जो है वो पेपर्स की कुछ जो आपको पता है वो ऊपर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, मुझे अब एग्जैक्ट टर्म मेरे जहन से निकल गई, खैर कि वो कंपाइल होने का एक तो ये इशू था। और दूसरा ये था कि वेटिंग लिस्ट में हमारे जब 2020 के स्टूडेंट्स जो एलोकेट हुए थे ना पंजाब से, उनकी एलोकेशन के बाद कुछ लोगों ने रिट कर दी हुई थी पंजाब की हाई कोर्ट के अंदर लाहौर में कि हम लोग जो हैं वो हमें अकोमोडेट किया जाए जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं। तो डिपार्टमेंट में 10 जो हैं वो मोर पीपल फ्रॉम मेल साइड और इसी तरह से फीमेल साइड से वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को उठाया। उनके ऑर्डर्स अभी तक जो हैं वो जनरेट आई थिंक हो गए हैं या एक दो दिन में हो जाएंगे। तो इस वजह से भी प्रोसेस डिले था कि जब तक एक रिक्रूटमेंट पिछली कंप्लीट ना हो जाए, कमीशन उसके बाद अगली रिक्रूटमेंट को प्रोसीड फर्दर तब तक नहीं कर सकता है बाय बाय लॉ जो है। तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। और खैर एक जो है वो न्यूज जो बड़ी कंफर्म है कि कमीशन अपने रिजल्ट के बाद कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं देने जा रहा। केपीके का कमीशन जो है वो जरा थोड़ा सुस्त है। पंजाब वाला कमीशन जो है वो काफी फास्ट है। तो आई एम श्योर कि अब जो है वो पंजाब वाले जो है वो जैसे ही कमीशन होगा रिजल्ट देगा, उसके साथ ही जो है वो 2-4 दिन के अंदर इंटरव्यूज के स्केड्यूल्स भी अपडेट कर देगा। सो होप फॉर द बेस्ट। आपका काम तैयारी करना है, कमीशन को उसका काम करने दीजिए। और आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है वो सक्सेस के लिए और सक्सेस आपके लिए। अच्छा जी, चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज हमारे पास 15 मिनट्स के बाद इमरान साहब का इंटरव्यू भी आज है। रियलिज्म इज अ वर्ड अननोन टू विलियम शेक्सपियर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन इन पर्टिकुलर,
दिस क्वेश्चंस आर न्यू फॉर यू, या आप फील करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप जो है वो इन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं? सेल्फ ब्लैकमेल नहीं होना, अच्छे वाला आंसर देना जो आपको लगता है सही वाला, कि आप इन क्वेश्चंस को फील करते हैं कि इजीली हैंडल कर लेंगे, या आप फील करते हैं कि ये हमें कुछ इंटरव्यू की सेटिंग्स में टफ टाइम देगा? सो हानिया का कमेंट आ गया, ऑलराइट। सो क्या फील करते हैं जी बाकी पार्टिसिपेंट्स के, ये क्वेश्चंस जो हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं डील करना, या आपको इनको देख के क्या लगता है कि क्या जैसे ही बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि इनका आंसर ये वाला हो सकता है? इंशाल्लाह सेम सो। अच्छा जी, ठीक है। रिलेटिवली जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि जो आपकी अटेंशन और आपके नॉलेज को स्ट्रक कर देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, रियलिज्म। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के नहीं, हमने ये कब कहा कि ऑलवेज डील्स विद इमेजिनरी सेटिंग्स? इमरान साहब, ऐसा नहीं है, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैंने आपको जो है वो रोड मैप दिया है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है किसी भी राइटर के लिए कि वो हमेशा इमेजिनेशन के ऊपर जो है रिलाई करे। ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, वरना राइटर्स जो होते हैं ना इमरान साहब, वो लाइफ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मैं राइटर हूँ, आप राइटर हैं, हम जिंदगी से जो है वो नहीं हट सकते हैं। विलियम शेक्सपियर भी जिंदगी से नहीं हटा, फैंसीफुल चीजों को तो उसने ऐड किया। बाकी जो है आप देखें उसके जो है वो इसी बर्लिन ने जो मेंशन की हुई है ट्रेजेडीज, उनको पढ़ें आप, देखें इमेजिनेटिव सेटिंग्स में तो चंद एक ही उसने सेटिंग्स रखी हैं, बाकी तो उसके ज्यादातर जो है वो लाइफ लाइक है। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। रियलिज्म इज अ वर्ड अननोन टू विलियम शेक्सपियर। अब ये देखें इमरान साहब के क्वेश्चन का आंसर जो है कि रोमांटिक सेटिंग जो है वो करता था विलियम शेक्सपियर, तो क्या वो रियल वर्ड के ऊपर या रियलिज्म पे बात नहीं करता था? देखिए, याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हैं ना, इट मीन्स कि वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि विलियम शेक्सपियर जो है वो नहीं बात करता था जो रियल लाइफ के मुतालिक है। सो यू नीड टू मेंशन हियर कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट, कि विलियम शेक्सपियर जो है ऐसा नहीं है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द थीबीज, ही इज टॉकिंग अबाउट इलीरिया एंड ऑल द थिंग्स, तो उसका रियल लाइफ से ताल्लुक ही कुछ नहीं है। विलियम शेक्सपियर ने तो लाइफ को ऐसे डिपिक्ट किया कि आज भी वो करेक्टर जिंदा है। ओथेलो देखें, आज भी कई ओथेलो फिर रहे होंगे जो अपनी डेस्डिमोना को कत्ल कर रहे होंगे। आज भी कई किंग लियर होंगे जो बेटियों या बेटों को हक दे देते हैं और बाद में वो फिर रहे होते हैं सड़कों के ऊपर जो है वो। ठीक है, आज भी यागो का करेक्टर जिंदा है। वो मुख्तलिफ शक्लें बदल सकता है, मुख्तलिफ चेहरे बदल सकता है, लेकिन देख लीजिए उसी तरह से जो है वो चल रहा है। ठीक है, सो हमारे पास जो है विलियम शेक्सपियर जो है, इसके मुतालिक कुछ कोट्स आप जरूर देखिएगा। एक बड़े फेमस जो है वो क्रिटिक है, एर्नल्ड की बात कर रहा हूँ, ARNOLD, आर्नल्ड जो है वो लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा दैट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर ने तमाम चीजें जो प्रोवाइड की, जो उसने रियल वर्ड से ली, अब उसने जो है वो अपनी, अगर कॉमेडी के अंदर आप बात कर रहे हो उसकी इमेजिनेटिव सेटिंग्स की, तो इमेजिनेटिव सेटिंग्स का ओरिजिन कहाँ पे है? ये आर्नल्ड कहते हैं कि अगर आप बात कर रहे हो कि विलियम शेक्सपियर इमेजिनेटिव सेटिंग्स की बात करता है कॉमेडी के अंदर, तो वो जो ओरिजिन है वो भी तो रियल लाइफ से ले रहा है चीजों को। उसके अंदर फीचर्स जो हैं, इलीरिया है तो इलीरिया के अंदर भी तो रियल लाइफ के फीचर्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एज यू लाइक इट के अंदर जो द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात करते हो, तो आर्डन का जो है वो क्या रियल लाइफ से हट जाता है? फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है। लेकिन हाँ ये सच है, उसने इसको इसलिए शामिल किया कि फॉरेस्ट जो है वो हमें एक रोमांटिक और फैंसीफुल फीलिंग्स देता है, बट फिर भी ये रियल लाइफ का करेक्टर है, अंडरस्टैंडेबल पार्ट है, कंक्रीट वर्ड का करेक्टर है। ठीक है, सो हमारे पास इस चीज को कहना है कि विलियम शेक्सपियर बिल्कुल हट जाता है, ये सारे के सारे जो है वो फैंसीफुल या इमेजिनेटिव सेटिंग्स पर रिलाई करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, सो हमारे पास जो है कुछ और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। आप इसको देख सकते हो कि जब ये करेक्टर्स की बात करता है अपनी कॉमेडीज के अंदर, तो वो भी सारे के सारे रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। विलियम शेक्सपियर के अंदर एक बहुत मजे की चीज थी, और वो थी इसके रियलिस्टिक, और इसके जो करेक्टर्स थे वो अर्थली करेक्टर्स हैं, जमीन के करेक्टर्स हैं। वो कुछ ऐसे करेक्टर्स नहीं है जो कि खला से आए हुए हैं, वो कोई ऐसे नहीं है जो मॉन्स्टर्स होते हैं। अगर ये इमेजिनेटिव सेटिंग्स को भी यूज करता है
तो उन करेक्टर्स की वे ऑफ लाइफ, एटीट्यूड्स, रहने सहने का अंदाज, बात करने का अंदाज अटली है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इसकी जो कॉमेडीज हैं वो पैक था, एक होल है सारे के सारे, ठीक है। और इसके जो फिगर्स थे, अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम बॉटम है। बॉटम के अंदर क्या होता है, बॉटम है, सटॉबी ब्लैक है, एंड्रवी ऑगटचिक है। सो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो वाइलिया है, ओलिविया है, मुख्तलिफ जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो वाइलिया और ओलिविया का तो आपने कैरेक्टर्स को देखते हैं। सो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ बेस्ड स्ट्रक्चर है। सो ये एक कमेंट के ये रियलिज्म इज अ वर्ड अननोन टू विलियम शेक्सपियर इज अ बेसलेस कमेंट। इट्स नॉट लाइक दैट। विलियम शेक्सपियर्स ऑल द कैरेक्टर्स आर अर्थली कैरेक्टर्स, और जो ये चीजें हैं ये गलत है उसके बारे में कहना, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के आंसर की समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 49 की समझ आ गई? इज इट क्लियर? So that we may proceed further. अगर आपको कहीं पे भी confusion है, we will stop here and we will discuss it once again. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी जरा आंसर दे दिया करें, because every single participant is important और इंटरव्यू का स्टेप काफी सेंसिटिव होता है और मैं नहीं ये चाहता कि किसी भी स्टेप पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ओके जी, thank you so much. Is it true that in William Shakespeare's comedies the front of stage is covered by females only? ये बहुत बड़ा कमेंट है खैर विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं उसके अंदर खवातीन होती हैं। और इस कमेंट के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो एक ऐसा पर्सन है कि जिसकी कॉमेडीज में से अगर खवातीन को निकाल दिया जाए तो वो कॉमेडी नहीं बचती। देखें, while talking about William Shakespeare's comedy, I would refer and recommend here that you should not skip William Shakespeare's history and tragedies. All right, विलियम शेक्सपियर जो है उसकी ट्रेजेडीज और हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, द स्टोरी इज डिफरेंट हियर। अब हिस्ट्री और कॉमेडी सॉरी ट्रेजेडीज के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हीरोज हैं। अब उनके साथ जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, जो उनके साथ मिसफॉर्च्यून्स होती हैं, वो मुख्तलिफ है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी कॉमेडीज की, तो कॉमेडीज के अंदर स्टोरी सारी की सारी चेंज है, वो रिवर्स हो जाती है। तो विलियम शेक्सपियर जो है, अगर हम ये बात कहें कि खवातीन जो है वो मरकजी किरदार अदा करती हैं, तो इसकी एक वजह है। और वजह ये है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो एक फेमिनिस्ट राइटर था। ये कहा जाता है कि फेमिनिस्ट है। क्यों फेमिनिस्ट है? उसने खवातीन को इंक्लूड किया तमाम जिंदगी के रैंक से, तमाम एजेस से। अब वो क्वीन को भी लेता है, वो मेड को भी लेता है, वो 50 इयर्स की एज की भी बात करता है, वो 15 की बात करता है। क्लियोपेट्रा के कैरेक्टर को अगर आप देखें और आप चाहे वो मेरिंडा के कैरेक्टर को देखें, क्वेश्चन देयर, is it referring to importance given to the female characters or numbers of female characters? No, it's talking about the female characters. That is the first part of your question. Okay, so it's talking about the importance, basically, the why William Shakespeare is exerting extra force on the characters of the female Hania. Okay, I'm sure that I have answered your question, Hania. So, talking about he is talking about all the ranks of the female. He is talking about Mirinda, Cleopatra की बात कर रहा है। So, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये खवातीन की इंटेलिजेंस को हाईलाइट करता है पोर्शिया के कैरेक्टर के जरिए। कितने लोग ऐसे हैं जो पोर्शिया के कैरेक्टर को जानते हैं? अच्छा, अगर कोई मैं ऐसा कैरेक्टर बोलता हूँ ना जिसकी समझ नहीं आती है आपको, आप वो लिख लिया कीजिए, ठीक है। वो विलियम शेक्सपियर के ही कामों के अंदर होते हैं। आप जानते हैं कि पोर्शिया का कैरेक्टर जो है वो पोर्शिया बड़ा जबरदस्त जो है वो एक रोमांटिक कॉमेडी थी। द मर्चेंट ऑफ वीनस के अंदर जो है वो आपने इसको देखा होगा। गुड। अच्छा जी, अब पोर्शिया जो है, अब हम देखते हैं इंटेलिजेंस है। इसी तरह से मच अडो अबाउट नथिंग के अंदर जो है एक कैरेक्टर है बीट्रस है। बीट्रस भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये जो है, इसी तरह से वॉयला का कैरेक्टर बड़ा चार्मिंग सा कैरेक्टर है। इसी तरह से एक और कैरेक्टर रोजालिन है एज यू लाइक इट के अंदर। तो विलियम शेक्सपियर की ये बात कि कॉमेडीज के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर को फीमेल कवर करती हैं, ये ठीक है। बीट्रस जो है और ये खवातीन को जब कवर करती हैं, अब ये वजह क्या है कि क्यों कवर करती हैं, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है
उसको ये लगता था कि खवातीन जो हैं वो वुमेन जो हैं वो दे शुड बी गिवन द इक्वल इम्पोर्टेंस। तो दे शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, और इक्वल इम्पोर्टेंस क्यों उनको देने चाहिए? इक्वल इम्पोर्टेंस देने की वजह ये है कि अगर आप उनको जो है इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो फिर सोसाइटी किसी और तरफ मूव करेगी। सो वजीहा, आपका एक क्वेश्चन है, आपका माइक ओपन कर रहा हूँ ताकि आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, सो आपका माइक मैंने ओपन कर दिया, प्लीज आप अपना माइक ओपन कर लीजिए। By mistake. Hand was raised by mistake. Sorry, sir. ओह, Am I? ऑलराइट ऑलराइट। Yes, या sir. या या। अच्छा, आपने कहा कि वो जो है हमारे पास ट्रैक्टर, आपका एक चैट बॉक्स में भी मैसेज है। अच्छा Yes, sir. वजीहा, जो है ना, दैट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर बेसिकली, that has been taken by William Shakespeare, and the character has been taken by Much Much ado Ado about, About Nothing. about Okay, nothing. Yes, sir. the thing is that कि बीट्रस का जो करेक्टर है ना, वो हमारे पास जो है वो काफी विटी और शार्प किस्म का है। ठीक है, Yes, आप sir. देखो ना, बीट्रस जो है वो शी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब वो जो है वो बात करती है बेंडिक को, जब वो डील करती है, ठीक है, वो जो प्ले Yes, को sir. सीज करती है कि वो बेंडिक के साथ जो है वो वंस अपॉन अ टाइम शी वाज इन लव विद बेंडिक एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, Yes, तो sir. ये हमारे पास जो है वो चीजें हैं कि शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को इस्तेमाल किया कॉमिकल रोल देने के लिए। उसने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से खवातीन जो है वो फ्री हैं, और उसमें जो है वो अपनी कजन के साथ किस तरह से वो डील कर रही है। ठीक है, Yes, सो sir. वीटस Okay. जो है वो अपनी कजन को डिफेंड कर रही है, वो उसके साथ बता रही है कि जब जो है वो सभी उसको अनफेथफुल होने के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट। सो यस, ये क्लेवर कैरेक्टर है। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. You're welcome, thank you so much. I'm lowering down your hand. अच्छा, Okay. Thank you. Allah. you're welcome. ओके, अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो ये कॉमेडीज हैं, ये कॉमेडीज हैं लव के मतलब, ये कॉमेडीज हैं जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, ये कॉमेडीज हैं जो एक्टिविटी की बात करती हैं। अच्छा, खवातीन जो है ना, आप ये काम जरा ये चीज नोट कीजिएगा, एंड यू मैं मेंशन सेम इन योर इंटरव्यू, जो वुमेन है वो हैप्पीनेस के लिए सेंटर में होती हैं, जो मेल है वो डिस्ट्रक्शन में सेंटर पे होती हैं, सेंटर पे होते हैं। जितनी भी ट्रेजेडीज आप देखोगे मेल सेंटर पे हैं, तो ट्रेजेडीज जो है वो क्या है, जो लाइफ के डार्कर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सॉरो के मुतालिक होते हैं, और जो हैप्पीनेस है, जो कॉमेडीज हैं, वो हैप्पीनेस को जाहिर करती हैं। सो ये हमारे पास विलियम शेक्सपियर इज गिविंग ample respect to the female by giving them the portion that is related to happiness. So ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का अपडेट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ये आगे मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर नथिंग मोर देन द स्टोरी ऑफ अ सिंगल मैन हीरो, इज इट ट्रू? अच्छा देखिए, शेक्सपियर ट्रेजेडीज को जब भी आप लेते हो ना, ये कहा जाता है कि वन मैन शो चल रहा है। वन मैन शो से क्या मुराद होता है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड वन मैन शो? देखिए, हम ये देखते हैं कि एक ही हीरो है ट्रेजेडीज के अंदर, और वो ट्रेजेडी के अंदर सारी की सारी ट्रेजेडी उसी के गिर्द घूमती है। अगर हम देखें कि इससे पहले ग्रीक ट्रेजेडी होती थी, अब ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो है वो देखते हो, जैसे सोफोक्लिस ने लिखा इडिपस रैक्स जो है, अब उसके अंदर ही आप देख लो, धोखे इडिपस किसी हद तक सेंटर में है, लेकिन कहानी जो है वो लेस के गिर्द भी घूमती है, कहानी जो है वो कैरॉन के गिर्द भी घूमती है, जो कास्टा भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो चोरस जो है, और या जिसे हम कोरस भी कहते हैं, वो भी अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो द थिंग इज दैट कि हमारे पास जो है सारी की सारा फोकस जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर हीरो के ऊपर होता है, जबकि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता था। सो विलियम शेक्सपियर ने एक तो इसे डिफरेंस किया, यहाँ पे दिया शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के अंदर ये चीजें मुख्तलिफ हैं, ये हमने एडमिट किया यहाँ तक। दूसरी चीजें जो वो हैं वो ये हैं कि विलियम शेक्सपियर ने एक और नया कॉन्सेप्ट दिया, इसने लव ट्रेजेडीज को इंट्रोड्यूस करवाया। लव ट्रेजेडीज क्या होती हैं? जैसे हमारे पास रोमियो एंड जूलियट है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव लव इन द ट्रेजेडीज, एंड सेकंड पे हमारे पास एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा हैं, वो भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया।
सो अब इसके अंदर जो है अगर हम इस कमेंट को रिफ्यूट करना चाहें कि हमारे पास जो है वो विलियम शेक्सपियर जो है इसके जो करेक्टर्स हैं वो सिंगल मैन के करेक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर हमारे पास सिंगल मैन नहीं रहते हैं। अगर आप इसके हक में आर्ग्यूमेंट्स में बात करना चाहें आप वो साइड भी ले सकते हैं। अगर आप ये बात करना चाहें कि नहीं सिंगल नहीं था इसके अंदर, तो जब हम रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं एंटोनियन को सेम इम्पोर्टेंस हीरोइंस को भी दी जाती है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि देयर नेम इज आल्सो द पार्ट ऑफ द होल ट्रेजेडी। सो माय रिकमेंडेशन इज कि आपको जिसमें मैक्सिमम डेटा आपके पास अवेलेबल हो आप दोनों साइड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें कि ये जो है वो सिंगल मैन की स्टोरी है आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, रेफरेंसेस के साथ जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप ये कहना चाहें कि ये नहीं है तो इसके लिए भी आप अपने क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा वैसे ख्याल है कि आप इस पे जाएं सेकंड पार्ट ऑफ द पोर्शन दैट इज नो इट्स नॉट द स्टोरी ऑफ अ सिंगल मैन और वुमन, यू मे टेक द रेफरेंसेस फ्रॉम द रोमियो एंड जूलियट एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कि उनके अंदर जो है वो क्या अहमियत दी गई है, ठीक है। ओनली इन ट्रेजेडीज दिस अप्लाई। या दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द ट्रेजेडीज एंड वजीहा ट्रेजेडीज के अंदर ही जो है बेसिकली उसने अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया ना, जो सफरिंग जो डेथ के सारे सीन्स को देखा जाता है, ठीक है। ओके जी, व्हाट इज द शेक्सपियरियन सेंस ऑफ ट्रेजेडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अच्छा देखिए, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द शेक्सपियरियन सेंस, let me tell you once again, when you're talking about the tragedy, tragedy ends in suffering and death. If a tragedy is not ending in sufferings or death, that is not a tragedy. Shakespearean tragedy जो है वो tragedy है that is always trying to depict the death of the hero. If the play of William Shakespeare is not ending in the death of the hero, that means उसके अंदर एक चीज मिस है और वो है Shakespearean sense. So Shakespearean sense means हमारे पास एक ऐसी ट्रेजेडी जिसके अंदर उसके हीरो जो है वो एंड पे नहीं मरता, वो शेक्सपियरियन सेंस उसमें नहीं है। अगर हम जो है देखें कि ट्रेलियस एंड क्रिस्टिडा विलियम शेक्सपियर की जो है वो, ठीक है। अगर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो ट्रेजेडीज वाले एलिमेंट्स तो हैं लेकिन हम इनको ट्रेजेडी नहीं कह सकते। इसी ब्रेडले के अल्फाज में आपको रिकमेंड करूंगा कि कोर्स जरूर कीजिएगा। उसने ये कहा था, इसी ब्रेडले ने 1904 में किताब लिखी थी द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के नाम से। वो ये कहता है कि अगर आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज की बात करते हो उसके अंदर सफरिंग्स को, कैलामिटीज को और डेथ लाजमी होनी चाहिए। अगर जो है वो डेथ वहां पे नहीं है तो इट मीन्स कि वहां पे किसी चीज की ओमिशन है, कोई चीज मिस है, ठीक है। अगर आप सफरिंग्स को, क्लामिटीज को हीरो के ऊपर वो नहीं देखते हो दैट मीन्स कि वो वहां पे शेक्सपियरियन सेंस मिस है। एसी ब्रेडले, एसी नहीं होता, A.C. ब्रेडले, ठीक है, एसी ब्रेडले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सुपरनैचुरलिज्म एंड द चांस बेस्ड हैपनिंग इन द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द वे, चेस बेस्ड जो है वो हैपनिंग्स का क्या मतलब होता है? देखिए, विलियम शेक्सपियर जो है उसकी ट्रेजेडीज के अंदर दो चीजों से हटके भी कहानी होती थी। पुराने वाले में क्या होता था, उसमें हीरो के अंदर कोई ना कोई फैटल फ्लॉ होता था। हीरो जो है वो पावर के लिए हंगरी होता था, पावर की वजह से जो है वो उसको कोई ना कोई, या उसमें फेट इन्वॉल्व होती थी, तो वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बन जाते थे। लेकिन सुपर नेचुरलिज्म और चांस बेस्ड हैपनिंग विलियम शेक्सपियर की भी ट्रेजेडीज के अंदर हैं या नहीं है? तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। इनका असर हम देखते हैं और ये बिल्कुल मौजूद है। सुपर नेचुरलिज्म, अगर मैं हैमलेट की बात कर लूं, हैमलेट में मान लीजिए यू अगर घोस्ट का कैरेक्टर है, घोस्ट को अगर आप निकाल दो तो शायद जो है वो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। क्या मुमकिन है कि हैमलेट के अंदर से घूस के कैरेक्टर को अगर हम माइनस कर दें तो वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी रहती है, वो शायद वो तो प्रोसीड फर्दर ही ना कर सके। सो यस, सुपर नेचुरलिज्म इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। सेकेंडली हमारे पास जो है वो थ्री विचेस मैकबेथ के अंदर जो है, अगर वो थ्री विचेस को आप निकाल दें तो आपको ये समझ में आता है कि वो तो शायद फिर कहानी प्रोसीड फर्दर ही ना कर सके। वंस अगेन मैं इसी ब्रैडले की अल्फाज को यहाँ पे कोट करूंगा,
और मेरी आपसे ये जरूर एक गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने इंटरव्यू में do not stay mum there, try to put maximum from those people who have completed their work on William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, so my recommendation is do not skip these important things, these important aspects of William Shakespeare's personality that has been evaluated by a lot many critics. So talking about कि supernaturalism जो है, so supernaturalism जो है वो directly जो है वो involved है, ठीक है। अगर आप बात कर लेते हो कि चांस बेस्ड हैपनिंग्स जो होती हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे चांस बेस्ड के अंदर मेरी रिकमेंडेशन होगी कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द चांस बेस्ड हैपनिंग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें पढ़िएगा रोमियो एंड जूलियट को। अच्छा जी, रोमियो एंड जूलियट रखा हुआ है, आई मीन पढ़ के रखा हुआ है, तो मतलब पढ़ रखा है, तो कुछ लोगों ने पढ़ के रख दिया होगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द रोमियो एंड जूलियट? किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है, समरी भरी हुई है इमरान साहब। Oh yeah, I did actually. The supernaturalism, to quote exactly, though it does not contribute to the action directly, yet has an intensifying effect on the thoughts and actions of the hero. About supernaturalism, as he barely says, though it does not contribute to the action directly, but has an intensifying effect on the thoughts and the emotions of the hero. Okay, so we have some aspirants जिन्होंने रोमियो एंड जूलियट को पढ़ रखा है। The second thing is about the chance-based happening. Chance-based happening means you should study the Romeo and Juliet. In Romeo and Juliet, what is happening? The chances are there. The hero, the Romeo is, the thing is that he does not receive the friar's message. So, because he is unable to receive the message of the friar, so अगर ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा तो शायद फिर ये समझ में भी ना बात मेरी आ सके, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें समझ में आ रहा होगा। The chance based happening में because he is not receiving the friar's message, and definitely this is the reason कि उसकी जो है वो मौत हो जाती है। So ये एक वजह है। And in second tragedy, King Lear, I'm sure a lot many aspirants they have completed King Lear. In King Lear, it was by chance that Edgar could not reach the prison earlier. So, and the hanging of Cordelia is there. And it was sheer accident. हमारे पास जो third example is from Othello, that Desdemona dropped her handkerchief at crucial moment. Once again, it is a chance-based happening. The fourth one is in Hamlet. You know, in the Hamlet, she was attacked by the pirates, so that he was back in Denmark. There was a chance-based happening in Shakespeare's tragedy. So yes, we can say that the chance-based happening in William Shakespeare's plays is frequently, and these chances are not altogether unnatural. So it's not like that the William Shakespeare is by forcing, exerting and putting all the chances in the tragedies. All right. So did I answer this question? Participants, is it clear? What do you mean by supernaturalism and chance-based happening? I'm sure that now you are able to answer this particular question. Okay. The last question is no conflict, no drama, justify. Well, once again, that is a quotation. Remember, whenever you're talking about the conflict, if I am about to answer this question in my interview, I would talk about two types of conflict. The first type is the internal conflict, and the second type is external conflict. And I will define the external conflict and the internal conflict. Well, external conflict means that when a hero and his party are pitted against the antagonist. So that is the external conflict.
And the internal conflict that is going on in the mind and the soul of the hero. That is between the attitudes, between the loyalties, between the conceptions. So ये हमारे पास internal conflict है. So हमारे पास अगर conflict नहीं है तो हमारे पास play नहीं है, हमारे पास drama नहीं है. अगर हमारे पास play नहीं होगा, strain नहीं होगा, conflict नहीं होगा, तो हमारा हीरो ना तो externally suffer करेगा ना internally suffer करेगा. देखो, जिंदगी मूव करती है फ्रिक्शन के साथ. जिंदगी मूव करती है तभी जब लाइफ के अंदर फ्रिक्शन होती है. सो अगर ये जो प्रोग्रेस है ट्रेजेडी के अंदर वो इसी तरह से होती है कि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन है. सो यहाँ पे हमारे पास कंफ्लिक्ट है. रोमियो एंड जूलियट के अंदर देखो, वहां पे कंफ्लिक्ट है. मूव ऑन करे. रिचर्ड द थर्ड के अंदर देखो, मैकबेथ के अंदर देखो, ओथेलो के अंदर देखो, लियर के अंदर देखो. इन तमाम के अंदर एक्सटर्नल भी कॉन्फ्लिक्ट है और इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट है. सो ओथेलो के अंदर हमारे पास जो है वो आप देखते हो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ठीक है, इंटरनल. और कोरियोलेनस जो है, जो कि एक बड़ी जबरदस्त ट्रेजेडी है, उसके अंदर सारे का सारा जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है. तो हमारे पास जो है ये, इट इज ट्रू दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, then without conflict it's not possible to move on with any drama. Oh yes, yes Hania, it is. Without conflict definitely you cannot proceed further. पोर्शिया जो है, अब उसमें देखें, पोर्शिया का conflict जो है वो internal है. she is thinking, और वो बहुत सी चीजों को सोच रही. ठीक है. So without conflict, yes, it is true that there is no drama without conflict. I'm sure that these questions are clear for your assistance, and for in case you want to copy these questions, I have pasted them in the chat box. आप इनको जो है, in case you want to copy them, you may go out. Okay, let's proceed further with our MOCC interview. In case you have any question, you may type your question, you may unmute yourself, and you can ask the questions. Otherwise, let's proceed further with the first interview, first MOCC session of today, that is with Mr. Imran Awan. So Imran, you're requested to unmute yourself. Okay, Hello, sir. Good evening. good evening, Imran. How are you? I'm good, sir. Thank you. Imran, what's about the flood in your area? Is everything up to the mark? Yeah, no flood in our area because we are far from, rivers and seas, and we are quite safe. Imran, should we proceed further with the formal discussion? Sure. Okay. Well, gentlemen, I'm sure that you are doing great. Your name is Imran. What do you mean by Imran? Sir, Imran means who has a long life. Okay. Imran is someone who is having long life. Yeah. How many times this word Imran was used in Holy Quran? Any idea? I'm not sure, but I guess 2 or 3 times. Oh, yes. It's just 3 times in Holy Quran. Well, Imran, talking about your last degree, from where you have completed your last degree? Yeah, I completed my master in English from International Islamic University, Islamabad. Okay. All right. Is it in literature, in linguistics, or a hybrid one? I mean, the title of my degree is MA in English Language and Literature. That's perfectly fine. Imran, what is the definition of literature? Sir, it is a depiction of life. I mean, what's going on around you. I mean, what is good or what is bad, irrespective of these things. Everything portrays. Okay. So you're from Chakwal, na?
Imran, am I audible? Imran, my question is, you're from Chakwal. Participants, please do confirm. I think I'm audible. Imran, you're getting me? Yeah, sir, you are audible. I hail from Okay. Chakwal, district Chakwal. That's fine. Iman, we are trying to understand the the definition of literature. So how many notable people from Chakwal you know? How many literary people from Chakwal, from your own district, you know? Yeah, Dr. Fateh Muhammad Malik, he has done PhD in Iqbaliyat, and he was the former vice chancellor of International Islamic University, Islamabad. All There right. are so many. I mean, those who are serving in defense forces like Air Marshal Noor Khan, General Yahya Khan, General Majid Malik, General Rajad Abdul Qayyum. These are the, I mean, who are serving in defense You know, forces, but literary person. one former prime minister of India is even, he was from your own Yeah, district. Do yeah, you know the name of that person? yeah, Dr. Manmohan Singh. All right. Yeah, that's fine. So, Imran, lastly, a very famous journalist, Ayaz Amir. Yeah, Ayaz Amir or Ayaz Amir. Ajaz Amir. Yeah, Have you read any Ajaz Amir. article of Ayaz Amir? Yeah, Ajaz Amir mostly writes in a Dawn newspaper, and there was a burning issue a few days back about Imran Khan. There was a television program, you know, where he criticized a lot. So he's a critic, basically, you want to say. Yeah, you can say. Imran, what are your hobbies? Yeah, my hobby is to watch cricket matches and book reading. And in these days, I'm reading Dr. Christopher Marlowe book, Edward All II. right. I'm more inclined to Christopher Marlowe. All right. So how many contemporary writers of Marlowe you have read? Because you're interested in Marlowe, so I'm sure that you have explored the details of Marlowe's life. So how many contemporary writers of Marlowe you have read so far? Yeah, there are six university wits. So I didn't read a lot about all the universities. You know, a few days back, I started reading a Spanish tragedy. Thomas All right. Green, Thomas Lodge, George Pile. These were Oh, the contemporary Imran, of what is the Christopher. difference between, because you have mentioned Christopher Marlowe, my question is, what is the difference between play and drama? Play is which drama is in a written form, and when that drama is acted, that will be called play. Drama is in written form, and when that very written form will be acted on the stage, that will be called play. Imran, you know, Christopher Marlowe introduced blank verse. Yeah. What is blank verse? So it is an iambic pentameter. I think we are facing some problems, Imran. You need to recheck your internet. Your voice is distorting. Participant, you are getting anything from Imran? Imran's voice is fine. I think that we are having distortion here. Okay. Imran, we are unable to get the answer of the previous question because there was distortion. Once again, we could not get the answer of blank verse.
Okay, Iman, you have muted yourself. Please do unmute yourself and go on with the answer of that question. All right, I have already allowed you to unmute yourself. Okay, sorry, sir. There was an internet connectivity issue, so No worries. suddenly, you know. Nobody, Yeah. just leave these details and let's talk about. Okay. Imran, Marlowe was the person who worked a lot on humanistic approach. What do you mean by humanism? Yeah. What is humanism? Yeah, humanism is that the man is the center of each and everything. I mean, when you give more importance to human being, that there was a you know, ism, you know, there was a, what you can say, a movement that is Okay, the, well, that's gentlemen, part of. all right, I go to my answer. My next question is about the blasphemous libels, blasphemous charges against the Marlowe. What Marlowe was doing actually, why the church was leveling the charges against Marlowe? Do you think these charges were baseless and they were just trying to pull out Marlowe from the very, the realm of reputation because Marlowe was enjoying his life and everything was going on and Marlowe was actually trying to set the order of the day. So, what is the actual degree? What is the actual worth of blasphemous charges? You know, he wrote Dr. Faustus, and that was actually there's blasphemy. Man wanted to know about God and everything. So the Christopher Marlowe was one of those. There was a test between Catholic and Protestant. So maybe that was the reason that, you know, other people say that he is blasphemous. He is writing blasphemous. Well, Imran, to cut the long story short, because Marlowe is your favorite writer, so how many cinematic version of Marlowe you have watched so far? Sorry, sir, I didn't. Okay, well, all right. So, how many tragedies of Christopher Marlowe you have read by text? Just Dr. Faustus. All right. Any favorite quote from Dr. Faustus? Was that the face that launched 1,000 ships and burned the topless tower of Ilium? Come, come, Helen, come, give me my soul again. Okay. That is my famous quotation. All right. So, when Marlowe says, hell is just a frame of mind, what do you mean by frame of mind here? Yeah. That is just in our fancy. It's imagination. It has no, you know, existence. It's just in our imagination. So don't go to that side. I mean, that where is hell? From where is not God, that is hell. So where we are, there hell must be. So without God, I mean, there is a hell. Okay, all right. So, have you read the poems of Christopher Marlowe? Uh, Hero and Leander is a poem by Christopher Marlowe. Sorry? Hero and Leander. There were two characters who love each other. One in the north side, and the other was on the, you know, south side. So they wanted to meet each other. So they have to cross the river. So that is about, yeah. Fair enough. Gentlemen, what is the name of your favorite poet? Any favorite poet? Well, you know, I'm more inclined to drama, but I like Wordsworth. Why Wordsworth?
Why not other writers? Because in lyricism we have a lot many writers. So why Wordsworth only? Yeah, he talks about nature, and he talks about very simple. What is nature? He uses very. What is nature? Nature is. Yeah, nature is. I mean, what nature is healing power. Nature is like when you look around, so nature Okay. is there. So nature is like a mother. Okay, where we can locate the nature as a healing power in William Wordsworth's books. So can you mention the name of any book, any particular poem where nature is working as a healing power? Yeah, and a preface to lyrical ballad. What do you mean I by forgot lyrical the name. ballads? What is the significance of this title? Why ballads? And why lyrical? Why not another title? These ballads were written in lyric form. So that's why this is called lyrical ballad. Gentlemen, what is the definition of a ballad? Ballad is a song written about any women or something like that. It's ballad. So if it is not about women, it's not a ballad. I'm not sure about it, but I know that is called ballad. It's Do you know about the origin of ballad? Yeah, in 14th century, I guess. The very word ballad is from which language? It's from Italian. Ballad. No, it's not. Sorry, No, sir. it's not from Italian. It's from French. Okay, because you have mentioned the name of lyrical ballads, so I'm sure that you know the difference between the ballads that are there in Europe and in Australia, in Africa, North America, and South America. So, do you know what is the difference between the ballads that vary from one country to another one? So, if when we talk about European countries, then what we understand with this very term ballad. So, I'm talking about the modern status of the ballad. So, any idea about what is the rhyming scheme of modern ballads? Imran, am I audible? You're getting the question. Well, Imran, I'm not getting anything from you. So there is a just there are different form, but in modern ballad, that's its pattern is A B B A A B B A C D C D. Okay, I think that you need to revise it once again after this interview. Last Correct. question about ballad is, what is the difference between ballad and ballad operas? Sorry, sir. Okay, gentlemen, mention the names of any 5 districts of Khyber Pakhtunkhwa. Yeah, Shangla, Banu, Mm-hmm. Lower Mm-hmm. Dir, Mm-hmm. Sawat, All right, and Noshera. fair enough. All right, and that's very good. What is the name of the capital of KPK? Provincial capital. Peshawar. Peshawar. Fair enough. The last question, and then we're going to sum up this interview. The very word Peshawar, you know this word, what is the origin of this word, the etymological grounds, from which language this word came into our language in Urdu? It's my guess. Maybe it's from Pashto. It's Peshawar, and then it became Peshawar. I'm not sure about it, but it's my guess.
It's basically from Pashto and Hindko, and that's good. Okay, well, ending your formal interview here, Imran. Thank you so much for such a wonderful discussion. Now I'm Thank going you, to sir. talk about your positive things First that of the all, I would like positive. to know my negative All right, points. So then. that will be, yeah. Okay. Well, Imran, what I perceive is that you need to improve a lot when you're talking about. Actually, you have successfully drawn the attention of the panel towards your favorite genre. It was, it was a tricky move that you successfully moved the interview towards Christopher Marlowe. That was a wonderful thing. But you need to read a lot many details about Christopher Marlowe. That is, going to be a flaw because you were not able to quote the very famous quotation from Christopher Marlowe. I perceive that you are not able to quote more than 2 to 3 quotations from Christopher Marlowe. The second thing where you need to improve is you are just claiming that you have read a single tragedy of Christopher Marlowe. That is an alarming situation. If a person is your favorite one, how it is possible that, and he is having just 6 or 7 total works. So how it is possible that you are not focusing your favorite writer? You know, it is out of the question that a Okay. person having Marlowe and his lifespan is from 1564 to 1593, and you haven't completed the works. Okay, so it seems that Marlowe is not your favorite, but you have taken Marlowe, you have prepared Marlowe as your favorite one. Okay. So, Okay. talking about your hobbies, you have mentioned cricket and book reading. Fair enough. And you quickly mentioned Marlowe. Maybe the panel they are going to ask the question that any other work apart from your literature, that is the name of the book that you have recently completed. So be careful here. And while you answer the question that is about blank verse, you need to understand the blank verse properly, the iambic pentameter, iamb, pentameter, hexameter, monometer, diameter. Okay, so all these All right. dexameters, so all these meters should be there. The answer of humanism, we could not get anything in the answer of this question. So you have tried your level best to answer, but the distortion was there, so we couldn't get the answer of humanism. Well, my recommendation is, first of all, you need to improve your interviews introduction in the sense you should not give extra details. Extra details, by extra details here, I mean, if you are cleverly mentioning all the things like your hobby is book reading, Imran, am I audible? Now audible, sir. Okay. So I think that you should not mention the name of the book at your own. Just wait for some Okay. seconds, and the person is Okay. going to ask you the same question. All Overall, right. these are the points that you need to improve. The positivity is overall the interview was good. Your confidence was good. You know a lot many pieces of details about your own area, and your grip over your favorite Christopher Marlowe was 70-30%. Like 70% you have prepared Marlowe, so I'm sure with this interview, you will get, above 60, but I'm not sure about above 70. So it means we need to improve all these indicators so we may be, able to get the marks above 70. So All right. the marks are between 70 to 80, they are going to give us an extra booster, and we will Okay. be there, inshallah, among the list of the sectors. So, but overall, it was a good interview. Okay, so Thank you, sir. somewhere 60 to 70, that means 67 or 68, maybe that is a score. All right. Okay, So, sir, I have one question. I was a little bit confused about my fluency. I mean, in the last interview in 2020, I got 60 marks in an interview, but unfortunately not allocated. So I 60 just marks. want, yeah, I got 60 marks. Mm-hmm.
So Okay. I just want to know about my fluency and about my grammatical mistake and my English. I mean, you told me about my favorite genre, that I have to prepare a lot about my favorite genre, but what about others? Do you think I was grammatically correct? Need to remain natural all the time. Okay. It sounds when we are listening you, it sounds like you know, on daily basis your communication with your partners is not in English. Okay, it sounds you speak most of the time perhaps your local language or another language, but English is not the language that is your first language. Okay, that is Yeah. what we are perceiving right now. But overall, talking about the English, your English is good, and English higher fluency is not going to give you the tough time. That is a positive indicator. Okay, so there's not Okay. going to be a barrier in your way. Okay, Okay. Yeah. Thank you, sir. I think I have answered your question, Imran. Yes, sir. Thank you so much, everyone. Hope to see all of you, inshallah, in tomorrow's class. Till then, take care of yourself. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.